Hello everyone, welcome to another video of Sri Academy. I am Sri John and today we are going to discuss about the current affairs of 5th September 2024. So without making any delay, let's start. So let us start the video with the first quiz of the day. That is, when was NPS introduced? The NPS stands for the New Pension Scheme. I have already made a dedicated video, okay, covering all the schemes, pension schemes of the country, right? I have made a separate video which will cover what is NPS, when was it introduced, what is UPS, UPS क्यों आया, NPS को replace करने के लिए, right? OPS क्या है, everything is in that video, okay? If you want, you can watch that video. I will provide the link in the description. Okay, so the correct answer is 2024. Okay, in the year 2024 NPS was introduced to replace the old pension scheme. Okay, I hope it's clear. One more question is, what is the full form of UPS? UPS stands for Unified Pension Scheme. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पेंशन का, आप देख सकते हैं. Okay, the link is in the description. So here is the second question. Ladli Behan Yojana is related to which state? Okay, so answer is Madhya Pradesh. Okay, what is this Ladli Behan Yojana? Let us have a look. Okay, so लाडली बहन योजना इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था कब 28 जनवरी 2023 को. ओके, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ the CM Ladli Behan Yojana is to provide financial assistance to the women of the state. Okay, so important things that you need to remember is Ladli Behan Yojana, where it has been launched. It was launched in Madhya Pradesh by the Chief Minister of Madhya Pradesh. Okay, और कब लॉन्च किया गया था? In the year 2023 को. Okay, so what is the aim of this yojana? Is to provide financial assistance to the women of the state. Okay, वुमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, राइट, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ओके, लेट अस स्टार्ट with the first news of the day. That is, the Union Minister Arjun Ram Meghwal launches the notary portal. Now the first thing is, what do you mean by notary? Okay, so notary का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली notary is official, okay, that is authorized by the government to perform certain legal activities, okay, such as your verification of identities, signatures. ये सब काम करने के लिए notary को मतलब गवर्नमेंट ने रखा है नोटरी को. बेसिकली व्हाट नोटरी विल लुक आफ्टर सम ऑफ द लीगल एक्टिविटीज, ओके, लाइक वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज, सिग्नेचर वगैरह. ये वो जो भी इम्पोर्टेंट लीगल काम होता है वो एक नोटरी देखता है, नोटरी देखता है. सो ये पहले क्या होता था? इट इज अ हेक्टिक टास्क, यू नीड टू गो टू द ऑफिस. गवर्नमेंट ऑफिस आपको पता ही है कैसा होता है, राइट? इट टेक्स टाइम इन गवर्नमेंट ऑफिसेस. बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, बट in order to remove all this paper work and make the work more efficient, government ने ये notary portal launch किया है. Let us see what is this notary portal. Okay, so the Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal, you need to remember it, very important. Okay, who is the Union Minister for Law and Justice? It is Arjun Ram Meghwal. Okay, launches the new notary portal in New Delhi. कहाँ पे launch किया? New Delhi पे. Okay, addressing the occasion. Okay, he launched he hailed the launch of the dedicated notary portal as an important step forward towards providing a paperless, faceless and efficient step towards goal of digital India. तो इसको क्यों लॉन्च किया गया हुआ है? As I have already explained, राइट, पहले बहुत सारा you need to go to the office. गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में आपको पता ही है, it takes a lot of time to do the things, right? So इन सबको, ये सब पेपर वर्क को हटाने के लिए, काम को और भी फास्ट बनाने के लिए, in order to make the works more efficient, okay, the government has launched a new notary portal where you can do all the things that you need. Before you had to go to the office, okay, जो जो काम आपको ऑफिस में जाके करना पड़ता था, अभी ये नोटरी पोर्टल में आप कर सकते हो. इससे क्या होगा? इससे मतलब जो गोल है इंडिया का डिजिटल बनने का, उसकी तरफ हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. सो बेसिकली this is the main purpose of this notary portal, okay, just to make things more paperless, faceless. Okay, that is all. And here the important thing that you need to remember is the Union Minister for Law and Justice कौन है? Arjun Ram Meghwal. Okay, so this is the expected question. कौन? Who is the Union Minister for Law and Justice? Option number B, Arjun Ram Meghwal. Okay, other important
things that you need to remember. Okay. जितिन राम मंजी कौन से मिनिस्ट्री देखते हैं? वो देखते हैं एमएसएमई का. ओके, दैट इज मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ऑफ इंडिया. ओके. अन्नपूर्णा देवी कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. जेपी नड्डा कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया. ऑल दिस मिनिस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा बोलता हूँ, यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द मिनिस्टर्स अलोंग विद देयर डिपार्टमेंट. ओके, फिर से लेट्स रिपीट वन मोर टाइम. ओके, अर्जुन राम मेघवाल कौन सा है? दैट वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ. ओके, ही इज द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस. ओके. जितिन राम मंझी कौन सा है? एमएसएमई का. दैट इज मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ऑफ इंडिया. अन्नपूर्णा देवी, I already told you. Okay, even yesterday we discussed about Annapurna Devi. Okay, the Ministry of Women and Child Development. JP Nadda, Minister of Chemical and Fertilizer of India. Let's move to the next news. Okay, President Draupadi Murmu inaugurated the Vishwashanti Buddha Vihara in Maharashtra. Okay, so President Draupadi Murmu inaugurated and dedicated the Vishwashanti Buddha Vihara in Udgir Latur district. You need to remember, okay, this district is in Madhya Pradesh, sorry, Maharashtra. Okay, she also installed a statue of Gautam Buddha inside the Vihara and paid tribute to Dr. B.R. Ambedkar by offering flowers at his statue. The statue of Lord Buddha installed at the Buddha Vihara, Vihar, is weighs around 520 kilogram and it's 10.5 feet tall. Okay, the important things that you need to remember. President ने क्या किया? एक इनोग्रेट किया एक विश्व शांति बुद्ध विहारा. बेसिकली द मॉन्क्स. ओके, जस्ट फॉर द मॉन्क्स टू स्टे देयर. ओके, उन्होंने क्या किया? इनोग्रेट किया है विश्व शांति बुद्ध विहारा. कहाँ पे? महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में किया है? उदगिर लरू उद, उदगिर लतूर डिस्ट्रिक्ट. यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. इससे भी इंपॉर्टेंट, उन्होंने क्या किया है? सी ऑल्सो इंस्टॉल द स्टेचू ऑफ गौतम बुद्ध. ओके, सी उन्होंने एक स्टेचू को इंस्टॉल किया है गौतम बुद्ध का. यू नीड टू रिमेंबर द डायमेंशंस ऑफ द स्टेचू. ओके, दैट इज 520 किलोग्राम है. स्टेचू वेट इज 520 किलोग्राम. ओके, वेट 520 किलोग्राम है और स्टेचू कितना टॉल है? 10.5 फीट टॉल. ओके, यू नीड टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. कहाँ पे ये विश्व शांति बुद्ध विहारा? कहाँ पे? महाराष्ट्र में. कहाँ पे? उदगिर लतूर. ओके, डिस्ट्रिक्ट. और ये जो स्टेचू एक बुद्धा जी का एक स्टेचू जो कि इंस्टॉल किया गया है, उसका वेट क्या है? 520 किलोग्राम्स एंड इट्स 10.5 फीट tall. I hope it's clear. So let's move to the next news. Okay, India to host the second edition of International Conference on Green Hydrogen from September 11 to 13. So India is going to host the second edition. Okay, first edition नहीं है, मतलब इससे पहले first edition हो चुका है. Okay, so India will currently be hosting the second edition of International Conference of Green Hydrogen ICGH. Okay, कब करेंगे host? September 11 to September 13. Okay, so let's see what's in the news. India will hold the second edition of International Conference of Green Hydrogen from 11 to 13 September in New Delhi. कहाँ पे करेंगे host? New Delhi पे. Okay, so second important thing that you need to remember is New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi. You need to remember this also. कौन है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर? कौन है इंडिया का? हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? It is Prahlad Joshi. Okay, remember the name. Announced this while addressing, okay, the event. Okay, ICGH 2024 will have 120 plus exhibitors. Okay, more than 6,000 delegates, okay, are expected to attend the event. Important thing you need to remember. Okay, ये second edition है International Conference of Green Hydrogen का. कब होने वाला है ये? September 11 से 13 को. Okay, now the most important thing that you need to know is ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन देख रहा है? ये प्रहलाद जोशी जी. ओके, ही इज द मिनिस्टर. ओके, that was all for this news. Okay, that you need to remember. So what is the expected question from this news? The expected question is, when was the National Green Hydrogen Mission launched? And the correct answer is 2023.
Now let us see what is this National Green Hydrogen Mission. Okay, so नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है, ओके लेट मी गिव यू ए आउटलुक. ओके सो ये बेसिकली एक मिशन है जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. ओके, ग्रीन हाइड्रोजन जो कि बहुत जगह पे यूज होता है, राइट राइट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स या केमिकल इंडस्ट्री में बहुत जगह पे वी यूज दिस ग्रीन हाइड्रोजन. ओके सो this national green hydrogen mission is basically a mission, okay, so that India becomes self sufficient. Okay, इतना सारा मतलब ग्रीन हाइड्रोजन अपने देश में प्रोड्यूस कर सके ताकि वो उसको एक्सपोर्ट भी कर पाए. ओके, दैट्स व्हाई दैट वाज द मेन मोटिव ऑफ द ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. So the government of India launched the National Green Hydrogen Mission with an outlay of rupees 19,744 crore in January 2023. Things you need to remember: total kitna kharcha, the budget allocation. How much is the total allocation for this mission? Kitna paisa dega government is mission ko? So government is going to spend around 19,744 crore rupees. Okay, for National Green Hydrogen Mission. और इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2023. ओके, थ्रू दिस मिशन इट्स एम टू डेवलप इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर production, uses and export of green hydrogen and its derivatives. Okay, the mission is expected to lead to develop 5 million metric tons per annum of green hydrogen production capacity by the year 2030. So 2030 तक ये मिशन लॉन्च किया गया है और by the end of 2030, okay, India will be able to produce 5 million metric tons of hydrogen. Okay, hydrogen, green hydrogen. So हम लोगों को क्या क्या याद रखना है related to national green hydrogen mission? First thing that you need to remember is the total outlay. Okay, total budget कितना है? 19,744 crore. Second thing, when it was launched in the year January 2023. Okay, so बाई 2030 कब तक ये रहेगा मिशन? 2030 तक रहेगा. तब तक इंडिया विल बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके, ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली. एक साल में इंडिया कितना बना पाएगा तब तक? 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. आई होप इट्स क्लियर. Let's move to the next important news. Okay, so the World Bank suggestion for India to consider joining RCEP based on flawed, outdated projection GTRI. Very important news. Okay, इसको थोड़ा डिटेल से हम लोगों को समझना पड़ेगा. Okay, so let us understand before going through this news. Let's understand what is the meaning of RCEP. ओके, आरसीईपी क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. आरसीईपी बेसिकली क्या है? ओके सो आरसीईपी इज अ ब्लॉक, ओके, कंप्राइजिंग ऑफ योर 16 मेंबर्स, मेंबरिंग कंट्रीज, एशियन कंट्रीज मोस्टली. मतलब क्या होता है बेसिकली? ब्लॉक मतलब क्या होता है? मेनी कंट्रीज दे कम टुगेदर विद एग्रीमेंट कि हम लोग ट्रेडिंग करेंगे और हम लोग एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करेंगे. मतलब जब भी मैं किसी और एक कंट्री से कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, आई वोंट चार्ज एनी टैक्स टू हिम, और जब मैं कुछ चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो मुझ पे टैक्स चार्ज नहीं करेगा. ओके, बेसिकली इट्स अ deal. Okay, it's a deal agreement between some of the countries so that they can have a free trade. कोई टैक्स वैक्स नहीं होगा जब भी दे विल ट्रेड, द मेंबर ऑफ दैट ब्लॉक विल ट्रेड विद ईच अदर. दे विल नॉट हैव एनी एनी रेगुलेशंस नहीं होगा. दे वोंट हैव एनी टैक्स, टैक्स नहीं होगा जब भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, सो दिस आरसीईपी ब्लॉक इट कंप्राइजेस ऑफ 10 आसियन ग्रुप मेंबर्स. अभी आसियन ग्रुप क्या है? बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है उनका 10 कंट्री मिलके एक आसियन ग्रुप फॉर्म किया है. ओके, आई विल मेक ए, if you want to know more about ASEAN group, you can comment me down. Okay, I'll make a separate video of what is ASEAN, but just for time being, remember that ASEAN is basically a group consisting of 10 members. Okay, 10 member countries of Southeast Asia, that is Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Philippines, Laos and Vietnam. Okay, ये 10 कंट्री मिलके आसियन फॉर्म किया है. Okay, just remember that. Okay, along with this 10 countries there are 6 more partners. Okay, ये 10 countries को together we used to call them ASEAN. Okay, they are ASEAN. Along with this ASEAN, 6 more partners जैसे कि हो गया चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ओके, दिस ASEAN 10 countries, okay, 10 countries मिलके ASEAन फॉर्म किया है.
उनके साथ 6 more partners, okay, they together form the RCEP, which is your regional comprehensive economic partnership. Just remember that, okay, 10 ASEAN countries plus 6 more countries together they are forming a bloc which is known as regional comprehensive economic partnership. And the main intention of RCEP is basically a agreement, okay, agreement among these countries that we will do free trading, okay. तुम मेरे देश में कुछ भेजोगे इसके लिए मैं टैक्स नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे देश में कुछ भेजूंगा इसके लिए तुम मुझे टैक्स चार्ज नहीं करोगे, okay, whatever I will import I won't charge any tax from you if you are a member of the group. If I export you something, you won't charge any tax on me. Okay, वैसे type का एक agreement between these countries. Okay, so initially when this RCEP was formed, okay, RCEP was formed. India was also a member. Okay, India was also a part founding father kind of. Okay, founding nation India भी था जब ये RCEP फॉर्म हुआ था. इंडिया भी एक पार्ट था उसका. Okay, India was also having a great importance, okay, in the formation of RCEP. But in the year 2019 कुछ ऐसा हुआ that India decided to withdraw, okay, from RCEP. India ने ये क्या हुआ, India thought like we won't be a member of this RCEP because India thought इससे हम लोगों का फायदा नहीं हो रहा था. Okay, so India decided to came out of RCEP. सो अभी 16 कंट्रीज है, तब 17 कंट्रीज था, ओके, टोटल जब इंडिया था. बट 2019 में इंडिया ने विड्रॉ कर लिया, इंडिया जस्ट विड्रॉ. Okay, now so there are 16 countries in the RCEP. Before when India was also a part of it, there were 17 countries. Okay, so now let's see what the news is telling us. Okay, so the World Bank जो है, ओके, इंडिया ने अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इंडिया आरसीईपी से मतलब निकल गया था. ओके, इंडिया जस्ट विड्रॉ itself, मतलब इंडिया विड्रॉ फ्रॉम आरसीईपी. ओके, विड्रॉ कर लिया खुद को. सो द वर्ल्ड बैंक सजेशन फॉर इंडिया टू रिकॉन्सिडर ज्वाइनिंग आरसीईपी. वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली इंडिया को सजेस्ट किया था कि आप लोगों ने जो ये विड्रॉ कर लिया है आरसीईपी में, ये आपको फिर से एक बार सोचना चाहिए. यू शुड कंसिडर रीजॉइनिंग आरसीईपी. ओके, आप लोगों ने गलत किया वहां से बाहर निकल के, आपको फिर से एक बार सोचना चाहिए एंड यू शुड अगेन जॉइन आरसीईपी. ओके, सो वर्ल्ड बैंक ने ऐसा रिसेंटली इंडिया को बोला था. ओके, वर्ल्ड बैंक सजेस्टेड रिसेंटली इंडिया दैट यू शुड रिकंसिडर जॉइनिंग आरसीईपी. Okay, it will be more profitable rather than leaving RCEP. You should think again. Okay, think once more that you should join RCEP. Okay, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा था. But the news is World Bank suggestion for India to reconsider joining RCEP based on flawed outdated projections. ओके, ये जो वर्ल्ड बैंक ने सजेशन दिया था इसको क्रिटिसाइज किया है जीटीआरआई ने. ओके, जीटीआरआई ने बोला है आप लोग जो ये सजेशन दे रहे हो इट इज बेस्ड ऑन फ्लॉज आउटडेटेड प्रोजेक्शन. ये मतलब फ्लॉड है, इसमें इसमें मतलब कुछ गड़बड़ी है. आप लोग जो भी ये दे रहे हो कि मतलब इट्स not authentic type. Okay, it's just saying that it's saying World Bank that your suggestion to reconsider, your suggestion to India, your suggestion for India to reconsider joining RCEP is based on flawed and outdated projection. आप लोग ये जो भी suggestion दे रहे हो, okay, right, it's not uh, it's not based on real world data. Okay, there is a flaw in your suggestion. ऐसा बोला है किसने, जीटीआरआई. नाउ व्हाट इज जीटीआरआई? जीटीआरआई इज बेसिकली ए थिंक टैंक. ओके, थिंक टैंक. व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव. ये ग्लोबल स्टेट रिसर्च इनिशिएटिव है. इन लोगों ने वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज किया है. इन लोगों ने वर्ल्ड बैंक को कहा है कि योर सजेशन फॉर इंडिया टू रिकॉन्सिडर ज्वाइनिंग आरसीईपी इज बेस्ड ऑन flawed assumption and outdated projection. For developing countries like India, policy decision must be rooted in real world data and a thorough understanding of the long-term implication. Basically, in a nutshell, ZTRI has criticized World Bank suggestion for India to reconsider joining RCEP. CTRI ने बोला है कि वर्ल्ड बैंक का जो भी ये सजेशन है that India should reconsider joining RCEP, ये बिल्कुल भी it's not based on realistic data. I hope it's clear. Okay, I hope it's clear.
If you want a separate video for what is Artian, okay, Artian group, just comment me down, okay, I'll make a separate video related to Artian. So that was all for today. Let's move to the vocabulary, okay. First, what is your ambivalent? Okay, ambivalent का meaning क्या होता है? Let me explain you in a very easy example. Suppose, okay, you are having a confused mind. Suppose it's a rainy day. Okay, rainy day. You have to buy something, but it's raining. The thing that you have to buy is very important. So you were in a stage of confusion. Okay, whether to go out or not to go out. लाइक ये जो कंफ्यूजन वाला फीलिंग है इसको ही हम लोग एम्बिवेलेंट बोलते हैं ओके सो इट्स मीनिंग इज हैविंग मिक्स और कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग अबाउट समथिंग अनसर्टेन और अनडिसाइडेड मतलब यू आर एट द स्टेज ऑफ कंफ्यूजन ओके यू कैन नॉट डिसाइड इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और ये लाइक सम यू हैव अ फ्रेंड ओके समटाइम्स यू फाइंड हर टू बी वेरी हेल्पफुल sometimes you find her to be very arrogant type so you are confused okay whether she is good or whether she is bad ओके यही जो फीलिंग होता है where you cannot decide okay whether she is good or whether she is bad इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं ambivalent बोलते हैं similar words are your synonyms हो गया uncertain conflicted undecided okay so let us see an example she felt ambivalent uh, about moving to a new city okay excited for a change but sad to leave her friends behind okay so यही सेम है she is ambivalent okay to move to a new city वो new city जब जाएगा वो खुश रहेगी या दुखी रहेगी वो confusion एक state of confusion में है okay she is also excited for the change that she will see in the new city but she is also sad that she is going to leave her friends behind I hope the meaning of ambivalent is clear to you so the next word is your matriculous okay showing great attention to detail very careful and precise okay so मतलब आप पूरा एक कॉन्शियसनेस के साथ एक काम कर रहे हो with very much of details okay very careful very precise okay so आप सपोज आप एक काम कर रहे हो एक कोई भी काम कर रहे हो सपोज यू कुकिंग ओके कुकिंग के टाइम पे आपका फुल कंसंट्रेशन वहीं पे है ओके यू आर वेरी केयरफुल with whatever you are doing okay you are very careful and you are precise okay you are giving great details great attention to the details okay इसको हम लोग क्या बोलते हैं meticulous okay so the synonyms are your thorough detailed precise okay the architecture was meticulous in designing every aspect of the building ensuring that nothing was overlooked जो आर्किटेक्चर ने जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाया है उसको बनाने के समय वो बहुत ही वो मतलब क्या थे वो बहुत ही केयरफुल थे वो वेरी प्रिसाइज ही वाज वेरी प्रिसाइज ओके ही वाज गिविंग ग्रेट अटेंशन व्हाइल मेकिंग making every aspects of the building I hope it's clear right meticulous ambiguous matlab in a stage of confusion okay where you cannot decide that whether it's good or whether it's bad okay or meticulous matlab very careful very precise okay I hope it's clear so that was all for today. You can follow me on Telegram where I'll be uploading this PDF. Okay, you can also follow me in my Instagram account. So if you enjoyed the session, please don't forget to like or give a comment. Okay, you can also subscribe to my channel. Please share my channel to your other friends so that I can get more and more views. And आपका views and like मुझे motivated रखेगा ताकि I can bring this kind of videos every day. Okay, I hope you enjoyed the session. So see you all tomorrow. Okay, that was all. Please don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye.